Good evening, student. I am again come back with the solution of your mathematics book, Granita Prakash, chapter 4. Okay. So in this chapter, I've made this solution in three part. So first part and second part has already been discussed. Okay. Now the remaining parts, the solution of the remaining part, that is part third, will be discussed right now. Okay, so this is the part 3, right? So this is the part 3 video. Now let us go to the main point. Okay, so the main point would be let's hold on. See, in the last video where I have discussed up to bar graph. Okay, so far in video 1 and video 2, that is part 1 and part 2 of this chapter 4, I have discussed regarding the graph, different types of graph. Okay, so if I summarize those, what type of graph we have discussed so far? Okay, so can I move, or you can do one thing, those who have not yet watched the video of my part 1 and part 2, I am asking you to go to this the topics which I have mentioned in the videos. So I am telling you in very brief the summary of the first and second video. It is, we have learned first the frequency diagram, frequency graph with telemarks. Then we have discussed about the pictograph, that is with the pictures. Then we have discussed the bar graphs, horizontal and vertical bar graph, how to draw and how to get the data from the pictograph and the bar graph. Okay, so now in this video, I will discuss regarding the aesthetic, how to increase the aesthetic views of the graph. Apart from the bar graph and the pictograph, how to increase more aesthetic view. Okay, so I'm scrolling down. I'll start where we had left in the previous videos. So, dear student, please remain with me till the end of this video. This video is not going to be longer. Okay. So, hope this much. Okay. Now, today's main topics is, first of all, we'll see you the, देखो यहाँ पे जो हमने सीखा था ना, like pictograph, bar graphs gives us nice visual way to represent the data. Okay, this portion is most important. That's why I'm reading this. Okay, so this portion, okay, this has been mentioned over here in the table. So where the length or height give frequencies of the different categories. Okay, now if I express this, each category is represented by a bar where the length or height depicts the corresponding frequency. Okay, the bars have uniform shapes between them to indicate that they are free standing and represent equal categories. You go through yourself. Okay, now the main theme is that the main theme of this
of this teaching process is that देखो how to increase the artistic and aesthetic consideration. Okay, यहाँ पे लैंडर ने बोला हुआ है in addition to the steps described in previous sections, there are also some other more artistic and aesthetics aspects one can consider when preparing visual presentation of data to make them more interesting and effective. Okay, first, when making a visual presentation of data, such as a pictograph or a bar graph, it is important to make it fit in the intended space. This can be controlled, for example, by choosing the scale appropriately as we have seen earlier. Okay, हमने जितना भी earlier pictograph and bar graph किया था वहाँ पे हमने एक proper scale चुना था, उसी स्केल के हिसाब से हमने इसका जो बार ग्राफ का लेंथ या पिक्टोग्राफ का नंबर ऑफ पिक्चर has been decided. Okay, it is also desirable to make the data presentation visually appealing and easy to understand, so that the intended audience appreciates the information being conveyed. Let us consider an example. Here is a table naming the tallest mountain on each continent, also with the height of each mountain in meters. क्या बताया गया इसमें? यहाँ पे एक माउंटेन का एग्जांपल दिया गया जिससे आप लोगों को ये आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक व्यू क्या होता है ग्राफ में ये समझ में आएगा. ठीक है, सो आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग यू दिस. सी, कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया. वी नो देयर आर 5 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, सो द टॉलेस्ट माउंटेन एंड हाइट. ठीक है, तो इसमें जो एवरेस्ट, इसका हाइट कितना है? 8,840 मीटर. ठीक है, सो सी इसमें से टॉलेस्ट होगा एवरेस्ट. ठीक है, तो इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ मच टॉलर इज माउंट एवरेस्ट देन माउंट कोस्क्यूज. कोस्क्यूज को नाम लिखा हुआ इसमें. ठीक है, ये कोस्क्यूज को, ये ऑस्ट्रेलिया में है. तो कितने ज्यादा लंबा है कंपेयर करना है ना. आर माउंट डिनेल एंड माउंट किलिमंजारो very different in height? This is not so easy to quickly discern from the large table of the numbers. ये टेबल नंबर से पता चलता है, बट जो माउंटेन है ना उसका जो हाइट है ना, इज नॉट यूनिफॉर्म. ओके, समटाइम्स इन समवेयर इट इज peak and somewhere we get valley. Okay, so it is not uniform. ठीक है, zigzag, and you can say valley peak, valley peak. So this type of data, how can we represent so that it is looking good and also the viewers can easily understand what types of data we are talking about. Okay, हम किस तरह से डाटा के बारे में टॉकिंग कर रहे हैं. ठीक है students, I hope you are getting my point. Okay, so I am not delaying this. I am going ahead with this discussion. So the main aim is to make it very interesting and looking good to the viewers. Okay, so you see, if we represent this by the bar graph, it will look like this. Okay, Asia Everest this much. Okay, यहाँ पे the value has been written in this direction in the x-axis, and in the y-axis I've already told you that we should mention the axis over here because it has not been mentioned. So this would be the x-axis, and the vertical axis always remain y-axis. Okay, so the value over here you can write it here. So I'm not writing down this value because you know about the bar graph. Okay, I'm not making it longer. So I'm briefing about it. You see the Asia Everest. Asia में जो Everest है, Mount Everest, that is the height is highest. Okay, this height is how much? Because this is the graph of Everest.
Mount Everest, so this is the value is in between this 8,000 and 9,000. Okay, that is 8,000 something, 800, 8,884 वहां पे लिखा हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे ग्राफ का थ्रू हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ओके, बट स्टिल वी वांट टू एनहांस इट मोर। ओके, इसमें थोड़ा और ज्यादा मसाला डाल के इसको सुंदर करना चाहते हैं ताकि हमको अच्छा लगे देखने में, ठीक है। और अच्छा करते करते देखो, हाउएवर बोला क्या, इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। जो मैथमेटिशियन और जो साइंटिस्ट इसमें कैसे आइडिया डाला, इसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं देखने में, ठीक है। सो देखो, हाउएवर सिंस द बॉक्सेस रिप्रेजेंट heights, it is better and more visually appealing to rotate the picture so that the boxes grow upward। अब इसको घुमा के बनाया वर्टिकली, ठीक है। सो बार ग्राफ जो मैंने बताया था, ये वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल को हॉरिजॉन्टली बना दिया गया है, ठीक है। ये और थोड़ा अच्छा लगता है, ये भी इससे भी अच्छा चाहिए मेरे को, ठीक है। वी वांट मोर बेटर, वी वांट मोर बेटर। सो इन जनरल इट इज मोर intuitive intuitive that suggestive and visually appealing to represent heights that are measured upward from the ground using the bar graph that have vertical bars or columns. Similarly, length that are parallel to the ground. For example, distance between location on the earth are usually best represented. Okay, now यहाँ पे जो है ना कुछ दिया हुआ है। If you wanted to, that is figure it out problem, okay, numericals. If you wanted to visually represent the data of the height of the tallest person in each class in your school, would you use a bar graph with vertical or horizontal bars? Definitely, because देखो, whenever you want to represent some height, height means what? Height means नीचे से ऊपर, मतलब ऐसे, if it is ground, then this is the height. You cannot, you can represent it by this is ground, this is horizontal graph, this is vertically bar graph. So to represent height, vertical graph is preferable, and it is good to look also, because height always measure from the ground towards the top, not vertically. Okay, so we will prefer vertical bar graph. Why? It because it looks good. Okay, if you are making a table of the longest rivers on a each continent, अभी रिवर्स को अगर जब शो करूंगा, तब हम रिवर्स तो ग्राउंड में फ्लो होता है ना ऐसे, तो रिवर दिखाने के लिए हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ठीक है। ओके, सो बार ग्राफ का यहाँ पे हिस्सा पूरा खत्म हुआ। आप जो जा रहा हो एस्थेटिक व्यू के लिए, आपको बताया था पहले एस्थेटिक व्यू के बारे में। सो now we can do one thing। देखो, मॉर्निंग में हमने सोल्यूशन का पार्ट या तो छोड़ा था, ठीक है, राइट। अब देखो पेज नंबर 103 में जो अभी जो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को साथ, ये दो क्वेश्चन, इफ यू वांटेड टू विजुअली रिप्रेजेंट द हाइट्स ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन एंड द लॉन्गेस्ट रिवर, ये दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसका आंसर यहाँ पे मैंने लिखा, कैसे लिखोगे देखो। ग्राफ विथ हॉरिजॉन्टल बार्स, फर्स्ट वाला ग्राफ, फर्स्ट वाला आंसर ये है, ग्राफ विथ वर्टिकल बार्स, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हो, ये लिख लेना आप लोग। सेकंड क्वेश्चन के लिए ये है आंसर, आप लोग इसको नोट डाउन करो, ठीक है। वेरी गुड। सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट सेशन, दैट इज न्यूमेरिकल से ओपन नहीं होगा, और इसमें होगा अंडरस्टैंडिंग, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। दैट्स व्हाई ये पे देखो, इन्फोग्राफिक्स। व्हाट इज इन्फो, व्हाट इज इन्फोग्राफिक्स, क्या इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे जो ग्राफ होगा ना थोड़ा अलग होगा, इसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स। मतलब
ज्यादा इंफॉर्मेशन पुट करना, इन्फो ग्राफिक्स मतलब ग्राफिक्स के जरिए इंफॉर्मेशन ज्यादा रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, when data visualization such as bar graph are further beautified with more extensive artistic and visual imagery, they are called infographics। तो इसमें आपको एग्जाम में डेफिनेशन आ सकता है व्हाट इज इंफोग्राफिक्स, ठीक है। सो यहाँ से आपको शुरू करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कुछ बार ग्राफ आर फर्दर ब्यूटिफाइड, इसको सुंदर कर सकते हो, विथ मोर एक्सटेंसिव आर्टिस्टिक विजुअल इमेजनरी, मतलब कुछ इमेज बना के, ठीक है, विजुअली। मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, इनका एग्जांपल दिया हुआ है। द एम ऑफ द इंफोग्राफ इज टू मेक यूज ऑफ अटेंशन, attracting and engaging visuals, communicate information even more easily, clearly and quickly in a visually pleasing way, ठीक है। An example how infographics can be used to communicate data even more suggestively. Let us go back to the table above listing the vertical bars, this column rather than horizontal bars। इसमें वर्टिकली करेंगे क्योंकि कोई अगर माउंटेन का हाइट बताता है ना, किसी का हाइट भी तो हम इसको वर्टिकली करेंगे, ठीक है। सो वी कुड यूज द ट्रायंगल्स। देखो हम जो बार ग्राफिक्स किया था ना, उसको और एस्थेटिक व्यू, आर्टिस्टिक व्यू बढ़ाने के लिए हम इसको ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो देखो ऐसा, ठीक है, इसको बार ना देखे इसे ट्रायंगल में देखो, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ये करता है, ये जो है ना होता है हिल, देखने में ऐसे होता है ना, इसीलिए इसको ट्रायंगल शेप में ड्रॉ किया। रूल्स वही है, स्केल लेना है, ये लेना है, लेके यहाँ पे देखो, देखो एवरेस्ट इसका हाइट, देखो यहाँ पे स्केल लिया, कितना स्केल लिया 1000 करके, 1 यूनिट। देखो यहाँ ये 1 यूनिट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एवरी मार्क है ना, ये वाले, इससे जो इसका डिस्टेंस है और इसका डिस्टेंस है एक दूसरे से, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। मैं समझा था आप लोगों को, यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 1000, ठीक है, 1000 मीटर, ठीक है ना। एक का एक गैप होगा 1000 मीटर, तो दिस कॉल्ड स्केल। ये स्केल लेके इन्होंने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, बार ग्राफ से थोड़ा अलग है, हटके, ठीक है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आर यू एंजॉयिंग इट? डेफिनेटली। चलो, while this infographic might look more appealing, अब इससे भी थोड़ा और अच्छा देखना है कैसे। देखो, the goal of our bar graph earlier was to represent the height of various mountains using bars of the ये पे डिटेल बोला है, मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ। अभी क्या है ना, उसको और सुंदर करने के लिए उसमें ना कुछ ऐसे विद, ये देखो ये जैसे कि हिली दिखता है, जैसे आर्टिस्टिक व्यू इसका बढ़ाता है, ठीक है ना। क्योंकि हिल का जो स्टार्टिंग में ये जो टॉप है, स्टार्टिंग में तो ये सीधा नहीं गया ना, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे गया, ठीक है, स्मूथली या रफली। सो द इवन हाईएस्ट पीक ऑन द 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, ऐसे ग्राफ दिखाया देखो। ये अच्छा लगता है ना, लगता है ये माउंटेन्स है, तो ये होता है एस्थेटिक व्यू, ठीक है। दिस इज इंफोग्राफिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसे लेता है, व्हाट इज दिस, while preparing visually appealing presentation of data, we also need to be careful that pictures we draw do not mislead us about the facts. In general, it is important to be careful when making the reading of infographics so that we can do not mislead। समझ में आ गया? ठीक है। आप देखो, ये उनका समरी है, ये चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। और कुछ तो छूट नहीं गया, हमने सारे सब कुछ खत्म, मैंने काफी सब कुछ कर लिया, ठीक है, कंप्लीट। अब देखो ये समरी है, समरी आप लोग पढ़ लेना, मतलब हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल हमने पढ़ा था, डेटा पढ़ा था, और डेटा पिक्टोग्राफ पढ़ा था, बारग्राफ पढ़ा था, स्केल पढ़ा था, की पढ़ा था, ठीक है ना, ये सब पढ़ा था। सो डियर स्टूडेंट, टुडे इज अप टू दिस बिकॉज द चैप्टर 4 हैज बीन finished, and I hope there will be no doubt about any things discussed over here. So still you, if you have any doubt regarding the topics I have covered over here from your book Granita Prakash,
you may uh, mention me in my comment box, and definitely I'll get you back, the student. So thank you for today. I will get you back in the next video. Thank you. Bye bye.